Hey guys, welcome back to my channel. This is Ambika. I hope you all are doing well. This is a DIY video. Those who have blemishes, dark spots, hyperpigmentation, pigmentation या फिर suntan हो, this problems लड़की हो या लड़कों को दोनों को ही होते हैं. एंड एक ही होम रेमेडीज़ है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है. इट्स क्वाइट अ मंथ आई हैव बीन यूजिंग दिस. मैं बना के घर पे यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स रियली वर्किंग. आई हैव ट्राइड दिस वन, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू शूट दिस वीडियो एंड लेट यू नो गाइज. यू कैन से दिस वन फेस मास्क और फेस स्क्रब दोनों ही वर्क करता है. As a face mask also, as a scrub also. So you just need 2 ingredients and बनाने में काफ़ी अच्छा है. So I'll show you in my today's video किस तरह से बनाना है और किस तरह से लगाना है. That I'll show you. So without further any delay, let's get started. You need turmeric powder and honey. So here I'm taking Patanjali honey and frying pan. First you have to roast the turmeric powder. रोस्ट तब तक करना है जब तक टर्मरिक पाउडर का कलर ब्राउन नहीं होता. See, the color of the turmeric powder turns brown. Can you see? Now add 2 tablespoons of honey and then mix it well. Our face mask is ready. Now let's try. So before applying this one on your face, keep your face wet. Face को wet करना है पहले and then you apply this. Apply all over your face. I suggest to use finger instead using brush. Just keep it for 10 minutes and then wash like a scrub you do. Then wash. I can feel the difference. Try once this one and see the result. I hope you like this video. Thank you. Bye bye. See you, Anshu. Anshu bhai.